So these are the drug which decreases the lipid level of your body, hypolipidemics, right? Now lipids, whatever absorb from your GIT, after absorption they are found in the body in the form of lipoproteins. Now what are the lipoproteins? Lipoproteins are nothing but the macromolecular complexes of lipid with the proteins. Lipo means lipid and protein means protein. So lipoproteins are nothing but the macromolecular complexes of lipid with the protein. Protein जब lipid के साथ में mix होकर complex बनता है तो क्या बोलेंगे lipoprotein. Now there are different lipoproteins present in your body. Now lipoproteins they consist of in that they have different lipids like triglycerides, cholesterol esters. The non-polar core part of your lipoprotein, they are made up of triglycerides. Triglycerides मतलब क्या है? When we'll see the lipids from biochemistry at that time I will explain this triglycerides. For now, what do you mean by triglycerides? They are the esters of fatty acid with the glycerols. Okay, esters of fatty acid with the glycerols. So TG, triglycerides, right? So non-polar part of or non-polar core or center of lipoprotein that is made up of triglycerides and cholesterol esters. And polar part of this lipoproteins they are made from phospholipids. Now यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है that is bad for your body. Increased cholesterol is bad for your body and increased phospholipids that is good for your body. So phospholipids they are very good. They serve as a very important function in your body. But cholesterol it is your enemy, right? Non-polar core of your lipoprotein made from triglycerides and cholesterol esters, right? And polar part is made from phospholipid. And there is another part in the lipoprotein known as apoproteins. In this non-esterified cholesterol is stored in the apoproteins. Lipoprotein they have a very important function in your body. So what is the function? They play important role in the distribution and recycling of your cholesterol. आपका जो कोलेस्ट्रॉल है खाने से आता है, मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल दैट कम्स फ्रॉम नॉन वेज सोर्स. जो आप नॉन वेज खाते हो या फिर आपको जो मिल्क आता है मिल्क, तो मिल्क में भी कोलेस्ट्रॉल होता है. कोलेस्ट्रॉल इज ओनली एनिमल फैट, इट इज नॉट अ वेजिटेबल फैट. आप बोल रहे हो कि मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ, वही कोलेस्ट्रॉल कहाँ से? आप कोलेस्ट्रॉल वेजिटेबल सोर्स में से बहुत कम आता है. So there is very less cholesterol in the vegetable oils or vegetable food, but most of the cholesterol that comes from non-veg foods, okay, and milk. Now you may say that a lot of non-veg people they are also having obesity, so they have different reasons behind that. उनको बहुत सारे reasons होते हैं, because of that they are suffering from obesity, okay. But mostly those people who eats non-veg food, in that people they may have higher level of cholesterol. Now lipoprotein has an important role in the distribution and recycling of cholesterol. Normal fasting plasma will have 700 milligrams of total lipids. 700 मिलीग्राम लिपिड्स होंगे आपके फास्टिंग प्लाज्मा में. मतलब फास्टिंग मतलब क्या? आप सुबह सुबह नाश्ता पानी नहीं किया आपने और आपने अगर प्लाज्मा लेवल आपका फैटी एसिड या फिर आपका लिपिड लेवल मेजर किया, ठीक है. So normal fasting plasma lipids 700 milligram. And now in this lipid it consists of triglycerides, cholesterol and phospholipids. ठीक है. आपको जो normal lipid होता है 700 milligram, there is a total normally lipids present in your serum. If you have analyzed normal fasting lipids of your body, so that is a 700 milligram. Okay. So it consists of total lipids like triglycerides, cholesterol as well as phospholipids. Now what are the different lipoproteins present in your body? ये important है, okay. So in that you have chylomicrons. These chylomicrons they mostly having triglycerides. chylomicrons में mostly triglycerides होता है, ठीक है. ट्राइग्लिसराइड क्या है? esters of fatty acid with glycerol. दूसरा टाइप का लिपोप्रोटीन होता है आपका chylomicron remnant. मतलब after the hydrolysis of chylomicron or after the hydrolysis of triglyceride, so whatever is remaining that is a chylomicron remnant. Third lipoprotein is nothing but the very low density lipoprotein. Third kind of lipoprotein, very low density lipoprotein, it is known as a VLDL, very low density lipoprotein. So lipoproteins they are classified depending upon their density. ज़्यादा डेंसिटी है उसको बोलेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसका कम है उसको बोलेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसका मीडियम है उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन. Chylomicron mostly consists of triglyceride, chylomicron remnant, very low
density lipoprotein, that is known as a VLDL. And in the very low density lipoprotein, mostly triglycerides are there, but some amount of cholesterol is also there. Now after that, intermediate density lipoprotein. So in the intermediate density lipoprotein, fifth one is a low density lipoprotein. Now in the low density lipoprotein, you have mostly cholesterol, and commonly it is known as a bad cholesterol. So remember, intermediate density lipoprotein and low density lipoprotein and very low density lipoprotein. So ये जो तीन है आपका, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein. These three, they are known as a bad cholesterol because they are not good for your body. Increase the level of this very low density lipoprotein or low density lipoprotein or intermediate density lipoprotein. So you may suffer from atherosclerosis. So एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. Increased level of following lipoprotein is associated with the highest risk of atherosclerosis. तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा. It is a low density lipoprotein. Low density lipoprotein, because in the low density lipoprotein, what happens? Low density lipoprotein is a complex of protein plus lipid. And what is the lipid? Mostly it is a cholesterol. So highest amount of cholesterol is present in the low density lipoprotein. And that's why if there is increased level of low density lipoprotein in your body, so you may suffer from atherosclerosis, right? That's why very low density very low density lipoprotein, उसमें ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है. इंटरमीडिएट डेंसिटी में कोलेस्ट्रॉल कुछ अमाउंट में होता है और फैटी मतलब ट्राइग्लिसराइड्स होता है. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और ट्राइग्लिसराइड कम होता है. दैट्स व्हाई दे दीज थ्री, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, very low density lipoprotein and intermediate density lipoprotein, they are known as a bad cholesterol. Now there is another one lipoprotein in your body, that is known as a high density lipoprotein. Okay, high density HDL, it is known as HDL, high density lipoprotein. Okay, now in this lipoprotein, most of the triglycerides are there. Cholesterol level of this HDL is very less, and that's why it is known as a good cholesterol. तो बैड वाले कौन से? बैड वाले है आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दे आर नोन एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल. ओके, नाउ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दे आर नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट. आपका हार्ट होता है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंक्रीज द लेवल ऑफ दिस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट मे कॉज आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकिंग ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी. ठीक है, यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी होता है आपका, उसका ब्लॉकेज कर देगा कौन? इंक्रीज द लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज नोन एज आर्थरियोस्क्लेरोसिस. एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ दिस हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट विल प्रिवेंट दैट आर्थरियोस्क्लेरोसिस. दैट्स व्हाई this high density lipoprotein, they are known as a good cholesterol, and low density lipoprotein, they are known as a bad cholesterol. Now if there is increase in the total lipids of your body, you may suffer from ओबिसिटी. जैसे ये मैडम बैठी है, ये मैडम ने क्या हुआ है, खाने को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया. इसको लगा होगा कि दुनिया में खाना बचने ही नहीं वाला है, तो पूरा उसने खा लिया, तो इतना ओबेज हो गया. तो ये मैडम को जल्दी हार्ट अटैक आ सकता है. तो आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है. वट एवर फैट्स you are eating, so extra fats, they will be deposited in your tummy area, that is known as adipose tissue, right? So adipose tissue में यहाँ पे सब आपका फैट जमा होगा. Now fat or lipids in the body, they are in the form of lipoproteins, that is a macromolecular complex of protein with the lipids. Now there are different type of lipoproteins, we have seen that. Okay, normally there are 700 milligram of lipids in your body, that is a you can estimate that value. Normal fasting serum level of lipid is nothing but 700 mg, which consists of cholesterol as well as phospholipids as well as triglycerides, right? Now different lipoproteins, they are nothing but the chylomicrons, mostly consist of triglycerides. Then chylomicron remnant is after the hydrolysis of chylomicron, whatever is remaining, that is a chylomicron remnant. Then very low density lipoprotein known as a VLDL. So it mostly consists of a triglyceride, but also consists of some amount of cholesterol. Now intermediate density lipoprotein, it also consists of in equal amount triglyceride and cholesterol. Low density lipoprotein, so highest amount of cholesterol is present in the low density lipoprotein, because उसका फंक्शन ही होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है,
ये क्या करेगा, मोस्टली काइलोमाइक्रोन मोस्टली ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड प्लस लिटिल बिट कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा। इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये इक्वल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल को प्लस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के अंदर। एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच विल इंक्रीज, इसमें क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड कम अमाउंट में होता है और ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होता है, इसमें सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम रहता है। दैट्स व्हाई एचडीएल इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल and these LDL, IDL and VLDL, they are known as a bad cholesterol. Okay, is that clear? And increased level of LDL is mostly associated with the increased risk of atherosclerosis. ये question already आ चुका है. Now we'll see the next part. Regarding the lipids, we'll see when we'll see the biochemistry. उसमें पूरा lipids, fatty acids, ये सब क्या होता है, phospholipids, वो सब biochemistry में देख लेंगे. Now, what is meant by atherosclerosis? What do you mean by atherosclerosis? So atherosclerosis, whatever heart you have, आपका एक ऑर्गन है हार्ट, जो आपको बहुत पसंद होता है, जो इजीली आप किसी को भी दे देते हो। हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है, मतलब ये कौन सी स्कीम है हार्ट ट्रांसप्लांट की, कि आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, ये ऐसा कौन सा स्कीम है भाई? तो हार्ट इज नथिंग बट द योर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एंड हार्ट इज सप्लाइड द ब्लड विद द कोरोनरी आर्टरी। ये जो छोटे छोटे आर्टरीज दिख रहे हैं आपको, तो उसका जो मेन आर्टरी है उसको बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। तो दिस कोरोनरी आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू हार्ट, बिकॉज हार्ट इज आल्सो वर्किंग, हार्ट में भी मसल है मायोकार्डियम, एंड इट नीड्स एनर्जी एंड ऑक्सीजन। सो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज डन बाय दिस कोरोनरी आर्टरी। नाउ दिस इज नोन एज नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, ये आप देख रहे हो नॉर्मली, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं। नाउ इफ देयर इज इंक्रीज इन द cholesterol level of body, what will happen? This cholesterol, increased cholesterol will be deposited in the arteries, small arteries of your heart and brain. तो यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे डिपोजिट हो गया, तो इसका जो ल्यूमेन है वो ल्यूमेन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से जो ब्लड जाने वाला है, जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, और बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फैटी fats or cholesterol. So there is a narrowing of blood vessel, and due to narrowing of blood vessel, your heart is not getting adequate blood supply. आपको हार्ट को जितना ब्लड सप्लाई लगने वाला है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में क्या है, ब्लॉक है। काय का ब्लॉक है? वो इंक्रीज्ड लिपिड्स जो होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो सब डिपॉजिट होकर वहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, और वो उसने क्या किया, आर्टरी को कम कर दिया साइज। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आएगा, एंड हार्ट को तो काम करना है 24 आवर्स, ठीक है। आप सो गए, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका हार्ट बीट चलते रहना चाहिए। अगर वो सीधा हो गया तो आप फिनिश है ना, मतलब ईसीजी होता है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ठीक है, PQRST पे ईसीजी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसके बाद में आएगा QRS, ठीक है, बाद में आएगा T, टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा जब तक है, मतलब जब तक ये लाइन टेढ़ी है तब तक आप जिंदा हो, ये जब सीधी हो जाएगी आपका विकेट गिर जाएगा, ठीक है। So very important. So there is a deposition of cholesterol in the inner layer of your coronary artery. So that is known as intima. So inner layer किसको बोलेंगे, intima. That is known as intima. There is a deposition of fat or cholesterol in the intima of your coronary artery. Because of that, there is a development of atherosclerotic plaque. Now, okay, and due to that, there is a decreased blood supply to heart. और यही अगर आपके ब्रेन में हो गया तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ओके। हाई और इंक्रीज्ड सीरम लेवल ऑफ लो डेंसिटी प्रोटीन दैट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस, एंड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन also increases the risk of atherosclerosis. High density lipoprotein, it has a protective role in the heart, it has an anti-atherosclerotic. So low density lipoprotein क्या करेगा, आपको atherosclerosis करेगा, मतलब it will increase the blockage of coronary artery, and high density lipoprotein it will decrease the blockage of artery, right? ये दो important है। Now extreme increase in the triglyceride level, अगर बॉडी का ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर इंक्रीज हो गया ज़्यादा, दैट इज एसोसिएटेड विद द पैंक्रियाटिस, तो आपको पैंक्रिया का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ओके। नाउ इन द बॉडी हाउ देयर इज अ कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से? सो बॉडी गेट्स कोलेस्ट्रॉल इन अ फ्रॉम द टू वे, योर बॉडी गेट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द डाइट
एक तो डाइट में आएगा कोलेस्ट्रॉल, एंड सेकंड देयर इज अ डी नोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय द लिवर एंड पेरिफेरल टिश्यू। तो कोलेस्ट्रॉल जो है आपके बॉडी में दो तरीके से आता है। पहला तो आता है आपका, आप जो ठूस ठूस के खाते हो, है ना, बिरयानी वगैरह खाते हो ना, पूरा बिरयानी, मीट वगैरह, सो वट एवर नॉन वेज फूड यू आर ईटिंग, so you are increasing your cholesterol level from diet and also from de novo synthesis। तो de novo synthesis क्या होता है, बॉडी के अंदर जो synthesis होता है उसको बोलेंगे de novo synthesis। So whatever synthesis is there in the body, that is known as a de novo। Your body is getting cholesterol to these two. First one is nothing but the your food or diet, and second one is nothing but the de novo synthesis of cholesterol by liver, because cholesterol is required in a body। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लगता नहीं, कोलेस्ट्रॉल लगता है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स। जो बाइल एसिड होता है, पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर, इन दैट बाइल इज स्टोर्ड, सो बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड लिवर सिंथेसाइजेस द बाइल फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज what are the acids of bile? Sodium taurocolate and sodium glycocolate. So colate means esters of cholic acid. Cholic acid is nothing but the cholesterol. So whatever bile acids are there, they are the derivative of cholesterol and they are very important for absorption of your fat। अगर वो नहीं होंगे तो आपके absorption नहीं होगा फैट का बॉडी में। So that's why अगर आपने कोलेस्ट्रॉल खाया भी नहीं है, अगर आप नॉन वेज खाते भी नहीं हो, फिर भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। Why? Because that is important, that is required for your body, and that cholesterol is required for synthesis of bile acid। That cholesterol is required for synthesis of your steroid hormones, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। Bile is required, cholesterol is required for synthesis of bile acids, bile salts, and it is also required for synthesis of steroid hormone। So that's why if you are not getting a cholesterol from the diet, your liver will start synthesis of cholesterol by the pathway known as the malolactic acid pathway। What is meant by atherosclerosis? Formation of plaque, formation of deposits, or formation of plaque or deposits in the coronary artery or in the arteries। Formation of plaque which is made up of cholesterol esters। Formation of plaque which is made up of cholesterol esters। ये मतलब cholesterol esters। Smooth muscles of your inner layer of your platelets, aggregation of platelets, then collagen which is a protein, fibrous protein present in the intima, and after that there is a calcification। So this everything, all these play cholesterol esters plus smooth muscle cells plus platelets, this collagen, fibrous protein and calcification, so that is nothing but the formation of plaque। ये जो plaque होता है आपका, that is known as the deposits or plaque or atherosclerosis। Okay? In the intima मतलब inner layer of, in the intima of large and medium sized arteries। Now this causes the narrowing of arterial lumen which leads to ischemia। Ischemia मतलब decreased blood flow supply। It also leads to ulceration of walls of arteries, thrombosis and distal embolism। थ्रोम्बोसिस मतलब यहाँ पे प्लेटलेट आके क्या होंगे, प्लेटलेट अगर आएंगे यहाँ पे ब्लड वेसल में तो क्या होंगे, वहाँ पे ब्लॉक है तो उसके जाके ऊपर टकराएंगे, वहाँ पे एडियर होंगे, so that will form a clot। Okay? That clot, if that clot is okay, if that clot is in the blood vessel, that is known as distal embolism। Distal embolism, right? That leads to weakening of your artery, weakening of your arterial wall and formation of aneurysm। GPAT 2019 में क्वेश्चन आया था, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ बल्ज, यहाँ पे ऐसा कुछ बल्ज होगा, ब्रेकिंग ऑफ योर आर्टरी नोन एज एन्यूरिज्म। जीपैट 2019 में क्वेश्चन। नाउ कॉमन साइट्स फॉर दिस आर्थेरोस्क्लेरोसिस, कहाँ पे होता है ये मोस्टली, आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पे होता है? सो कॉमन साइट्स फॉर आर्थेरोस्क्लेरोसिस नथिंग बट द coronary artery which is a artery which supplies blood to your heart and cerebral blood vessels। ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो आपको इश्चेमिक हार्ट डिसीज हो जाएगा। क्या होगा? इश्चेमिक हार्ट डिसीज, IHD, इश्चेमिक हार्ट डिसीज। इश्चेमिक मतलब लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट योर muscle cells will die, myocardial muscle will die, that is known as ischemia and myocardial infarction। So if it is in the heart, atherosclerosis, it is there in a coronary artery, then you will suffer from ischemic heart disease and myocardial infarction। Now if that atherosclerotic plaque is in a brain,
अगर ब्रेन के ब्लड वेसल है, सेरेब्रल ब्लड वेसल, उसमें अगर है तो वहां पे क्या होगा, आपको स्ट्रोक आ जाएगा. स्ट्रोक मतलब क्या, attack of paralysis. So if there is arteriosclerosis in the heart, you may suffer from myocardial infarction, ischemic heart disease, and if there is arteriosclerosis plaque deposit in the cerebral blood vessel, you may suffer from stroke and paralysis, right? Another major risk for arteriosclerosis is nothing but age. ठीक है, जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हो वैसे वैसे आपके बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म कम होता है और फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है. सेक्स, ओके, मेल फीमेल्स में. रेस, कौन से रेस से हो. ब्लड प्रेशर, if there is increased blood pressure, so that is also associated with the arteriosclerosis. Diabetes, if you are suffering from diabetes, so you may have arteriosclerosis. Smoking, okay, smoking in addition to hyperlipoproteinemia. ठीक है, अगर लिपोप्रोटीन बॉडी के ज्यादा हो गए तो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर. सो ये लिपोप्रोटीनेमिया दैट इज अ प्राइमरी फैक्टर फॉर आर्थरोस्क्लेरोसिस. ये तो मेन है. उसके बाद में इन एडिशन टू दैट, सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स. सो एज, सेक्स, देन रेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, दीज आर द फैक्टर्स. अगर कोई ज्यादा स्मोकिंग करते है उसको आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, स्मोकिंग करना नहीं है, ड्रिंकिंग. सो दैट इज आर्थरोस्क्लेरोसिस. नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट. डिफरेंट lipoproteins in your body and their composition. ठीक है, lipoprotein and their composition. Now chylomicrons, first one is chylomicrons और chylomicrons, इसको बोलते हैं सीएम. तो इसका साइज होता है 500 मिलीमीटर एंड इसमें मोस्टली क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स. 98% ट्राइग्लिसराइड. कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है उसमें, ना के बराबर रहता है. फॉस्फोलिपिड भी ना के बराबर. प्रोटीन 2% रहता है. वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इन दैट यू हैव 43 mm ऑफ साइज. ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है उसमें, कम होता है. एंड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है उसमें, प्रेजेंट होता है. सो यू कैन सी कोलेस्ट्रॉल इज 15%, ओके, एंड फॉस्फोलिपिड इज आल्सो 15% and proteins 10%, right? Now in a very low in a low density protein, so size कितना होता है, 22 मिलीमीटर. उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड कंटेंट होता है 15% एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कितना होता है, देखो 60%. फॉस्फोलिपिड 25% एंड प्रोटीन इन द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. 8 mm साइज होता है उसका एंड इन दैट ट्राइग्लिसराइड्स आर 10%, कोलेस्ट्रॉल आर 30% एंड phospholipids are 60%. So that's why अभी देखो यहाँ पे this LDL is known as a bad cholesterol, HDL is known as a good cholesterol. ये जो HDL है, high density lipoprotein, इसको बोलते हैं good cholesterol because in that mostly phospholipids आते हैं which are very very important for body. ये protective होता है. 60% phospholipids है and low density lipoprotein, उसमें देखो 60% क्या है, cholesterol है. And that's why increase the level of this low density lipoprotein, increased level of low density lipoprotein in your body, that is associated with the increased risk of arteriosclerosis. Question, we'll see the next. So देखो very low density lipoprotein में भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता ही कितना है, 15%. लो डेंसिटी में भी है. उसकी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसमें ग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल सिमिलर अमाउंट में होता है. Now next, so increase the level of lipoproteins in the body, they are known as a lipoproteinemia. अगर lipoproteins का level आपकी बॉडी में बढ़ गया है, so that is known as a lipoproteinemia. There are different types of lipoproteinemia. Okay, so like type 1 lipoproteinemia, in that chylomicrons are increased. Okay, so in that triglyceride levels is, chylomicrons में क्या होता है, triglycerides, and cholesterol क्या होता है, nil, मतलब no. Okay? So that's why increased level of or type 1 lipoproteinemia, is not associated with the arteriosclerosis. That's why it does not need any treatment. If you are suffering from type 1 lipoproteinemia, so you don't need any treatment. Now type type 2A lipoproteinemia, in that you have increased level of low density lipoprotein. Type 2A में देखो कौन सा क्या बढ़ता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. इसमें ट्राइग्लिसराइड नहीं होता लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या है, टाइप बी, टाइप सेकंड बी, इसमें भी देखो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका लेवल बढ़ जाता है. इसमें भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है, देखो यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई दीज टू दे आर
associated with the highest risk of atherosclerosis. क्यों है इनका atherosclerosis ज़्यादा होता है? Because in that you have cholesterol, higher amount of cholesterol in these two lipoproteins. So that's why type second A and type second B lipoproteinemia, they involves the risk of atherosclerosis and heart attack. Now in the type 3 lipoproteinemia, so intermediate density lipoprotein and chylomicrons, they are increased. So in that also you have cholesterol. So that is also related with the atherosclerosis. Now type 4 lipoproteinemia, in that increased the level of very low density lipoprotein. Very low density lipoprotein. इसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता है. Type 5 lipoproteinemia. So increased level of chylomicrons and very low density lipoprotein. In the treatment of your lipoproteinemia, so type first lipoproteinemia does not need any treatment. Okay? Type second lipoproteinemia, they can be treated with the statins. ये क्या होता है अपन अपकमिंग स्लाइड्स में देख लेंगे. Statins. Okay. Now type second B lipoproteinemia, you need a treatment with the statins or fibrates or vitamin B3 niacin. Okay. Now type 3 lipoproteinemia, you need a fibrates. Fibrates are nothing but the fibric acid derivative. They are the hypolipidemic drugs. Okay. Type 4 lipoproteinemia में आपको fibrates and niacin का ट्रीटमेंट लग जाएगा. Type 5 lipoproteinemia does not need any treatment. Lipoproteinemia second A, second B, 3 and 4, they needs a treatment and treatment is given also. Okay. Okay. What do you mean by TG? Triglycerides. CH means cholesterol, right? DLP means lipoprotein. P3 means niacin, nicotinic acid, and CM means chylomicron. Management of hyperlipoproteinemia. ये lipoproteinemia अगर होगा तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? So management of hyperlipoproteinemia. So first of all, जितना हो सके उतना डाइट मॉडिफिकेशन करो. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हो सके उतना डाइट मॉडिफिकेशन करो. बैड हैबिट्स छोड़ दो. व्यायाम करो थोड़ा सा. मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट, देन रिडक्शन इन द स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन और स्टॉपिंग ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग and treatment of other diseases. If lipoproteinemia or hyperlipoproteinemia is due to the another disease, if it is secondary to another disease, जैसे होता है if you are suffering from hypothyroidism, तो उसमें आपको लिपिड लेवल बढ़ जाएगा. If you are suffering from diabetes mellitus, लिपिड लेवल बढ़ जाएगा. Okay? So you have to correct that. So diet modification, relieving of stress, stopping of alcohol, smoking, then exercise, and relieving of your cause of secondary diseases like diabetes mellitus and hypothyroidism. And after that, अगर control नहीं होता है तो then you have to use lipid lowering drugs. Decrease in the intake of saturated fatty acids. So whatever saturated fatty acid you are eating, जो आप बड़े चाव से खाते हो, ठीक है, समोसा, जैसे समोसा का नाम लिया सबके मुंह में पानी आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही वड़ा पाव का नाम लिया पानी आ जाएगा. बट वो समोसा, वो वड़ा पाव, वहां पे क्या करते हैं वो कि एक बार मॉर्निंग में तेल डालते हैं और वो पूरा दिन उसी तेल में सब कुछ फ्राई करते हैं पूरा दिन. तो उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे. तो आफ्टर हीटिंग जो फैटी एसिड्स होता है उसमें जो डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो बिकॉज ऑफ द हीट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड, उनका सैचुरेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस फैट, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. एंड दैट फैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. सो दैट्स व्हाई जो ज्यादा वड़ा पाव, ज्यादा फास्ट फूड के ऊपर रिलाई करते हैं उनको ज्यादा ओबेसिटी होता है, उनको ज्यादा वेट बढ़ता है. दैट्स व्हाई. सो डिक्रीज इन द इनटेक ऑफ saturated fats and trans fat. Now you have to increase the consumption of poultry products, then low fat fish and skimmed milk and another helping vegetables. You have to take intake of omega-3 fatty acids like eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. ये जो क्या है, ये omega-3 fatty acids है. कौन सा? eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से आता है? इट इज ओनली प्रेजेंट इन द लीवर ऑफ साल्मन. जो आपको फिश होता है, फिश में ही आता है. दो तरह के, देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ फिश. साल्मन फिश इज देयर, देन seal fish is there. Those are found in the oceans. So in that liver omega 3 fatty acids आते हैं. ये क्या होता है omega 3 fatty acid? So I will explain when we will see lipids in the biochemistry. lipids जब देखेंगे तो मैं इसको now classification of your
hypolipidemic drugs. So hypolipidemic drug का classification. So these drug will decrease the lipid level of your body, right? So lipid level is very bad. Increased lipid level in the body is very bad for your health. So classification of hypolipidemic drugs. First, a drug which will decrease the cholesterol. Okay, so these drugs decrease the cholesterol. कौन सा drug है? Statins, cholestyramine, ezetimibe, and fibrates. Statins, cholestyramine, ezetimibe, and fibers. Not fibrates, fibers. तो statins क्या होता है? cholestyramine क्या है? ये ezetimibe क्या है? And fibers क्या होता है? Fibers मतलब आपके जो खाने में खाते हो उसमें ही फाइबर मिलेगा. जो रॉ खाते हो आप, जैसे if you are eating a raw vegetable, if you are eating a raw tomato, if you are eating something raw like a carrot, so you are getting lot of lot of fibers. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें फाइबर्स ज़्यादा खाना चाहिए. ड्रग डिक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल, सो स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रामाइन एंड इज़ेटिमिब एंड फाइबर्स. Now drugs those decreasing the triglyceride levels known as the fibrates or fibric acid derivative. Now drugs decreasing both cholesterol as well as triglycerides. So in that you have nicotinic acid. Now some antioxidants like robocall, that is also another classification. We'll see another classification, nothing but the HMG CoA reductase inhibitors. HMG CoA reductase inhibitor. ये क्या होता है? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटारिल कोए, हाइड्रोक्सीमिथाइल ग्लूटारिल कोए रिडक्टेस इनहिबिटर. ये क्या होता है? अपन बाद में इसका रोल क्या है इसे बोल देता हूँ. दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर. तो लीवर में कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस जो होता है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर. सो लीवर सिंथेसाइज द कोलेस्ट्रॉल. आपका अगर कोलेस्ट्रॉल मिल नहीं रहा है, if you are not getting from diet, so what will happen? Liver will synthesize the cholesterol. One pathway, one is a malonate pathway, and this enzyme is required for the synthesis of cholesterol. Hydroxymethyl butyryl CoA reductase. So through this pathway, it will synthesize the cholesterol. So you have to inhibit that. Like drugs like atorvastatin, pitavastatin, lovastatin, simvastatin, then pravastatin, rosuvastatin. So statins वाले statins, all the statins, they are nothing but the HMG CoA reductase inhibitor. Atorvastatin, pitavastatin, lovastatin, simvastatin, then parvastatin and rosuvastatin. All the statins are known as HMG CoA reductase inhibitor. HMG CoA reductase inhibitor. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, 2 बार, 2 times क्वेश्चन has been asked. HMG CoA reductase inhibitor कौन है? statins. आपको याद रखना statins. ठीक है, ये जो STATIN स्टैटिन्स जो है वो सब क्या है? HMG CoA reductase inhibitors. Now second class bile acid sequestrant. Bile acid sequestrant, ये bile acid को बाइंड करेंगे एंड उसका रीएब्सॉर्प्शन नहीं होना है. उसके साथ में जो फैट एब्सॉर्ब होता है उसको भी रीएब्सॉर्ब नहीं होना है. ठीक है, तो bile acid sequestrant, in that you have cholestyramine and cholestyramine. Now third class of your hypolipidemic drugs. ठीक है, थर्ड क्लास कौन सा है? लिपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिटर्स. ये थर्ड क्लास है आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स. लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स. लिपोप्रोटीन लाइपेज नाम का एंजाइम होता है. इसका काम क्या है कि लिपोप्रोटीन को ब्रेक डाउन करना. लिपोप्रोटीन लाइपेज, सो दे आर एक्टिवेटेड बाय फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव और फिब्रेट्स लाइक फेनोफिब्रेट, बेंजफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल एंड क्लोफिब्रेट. ठीक है, क्लोफिब्रेट, बेंजफिब्रोजिल, क्लोफिब्रेट, फेनोफिब्रेट, बेंजफिब्रेट एंड जेमफिब्रोजिल. So these are the drugs which are known as a fibric acid derivative, and they will prevent the absorption of, or they will activate the lipoprotein lipase enzyme. लिपोप्रोटीन लाइपेज का काम क्या होता है? अभी लिपोप्रोटीन, तो ये लिपोप्रोटीन को लाइपेज मतलब ब्रेक डाउन करने वाला. So lipoprotein lipase will break down the lipids, lipoproteins, and that's why gemfibrozil, fenofibrate, then benzofibrate and clofibrate. So out of that clofibrate is no more used. ये आजकल यूज नहीं करते क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट होता है. So it causes the cancer. That's why clofibrate is no more used now. Okay. Now fourth class is the lipolysis inhibitor. Lipolysis inhibitor. लिपोलाइसिस मतलब क्या? ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स. लिपो मतलब
लिपिड्स एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन. सो लिपोलाइसिस इनहिबिटर्स. आप बोलेंगे सर लिपोलाइसिस इनहिबिट क्यों करना है, अच्छा हो गया ना, तो ब्रेकडाउन हो रहा है. लिपिड्स का अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसमें जो लिपोप्रोटीन्स है वो भी रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ अर्थराइटिस. सो निकोटिनिक एसिड इज अ लिपोलाइसिस इनहिबिटर. Then other drugs are nothing but the ezetimibe and Google lip. Google lipids. It is a plant product. Google से आता है. It is a plant product. Okay. We'll see the classification once again. Hypolipidemics drugs. Those drugs which will decrease the lipids in your body. Right. So first class is nothing but the HMG-CoA reductase inhibitor. It is known as a hydroxymethyl butyrate, hydroxymethyl, hydroxymethyl glutarate coenzyme hydroxymethyl glutarate reductase inhibitors, and all they are known as statins. इनमें you will have lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin, then rosuvastatin, pitavastatin. Pitavastatin is the most potent drug. ये क्या है, pitavastatin के most potent drug among these. Okay. Now ये atorvastatin, rosuvastatin, ये जो दो है atorvastatin, rosuvastatin, these are the longer acting. rosuvastatin and simvastatin, these two are a pro drugs. बाद में भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So just remember statins means HMG को है reductase inhibitor, right? Second class आता है आपका bile acid sequestrant. So it will prevent the reabsorption of bile acid. आपका जो गॉल ब्लैडर है, जब आप खाना खाते हो तो आपके पेट में क्या है कि खाना खाने के बाद आपके पेट में क्या होता है कि एसिड रिलीज होगा. आपके पेट में जो एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियास, पैटिक लाइपेज, पीएचएस, वो एंजाइम रिलीज होंगे. उसमें बाइल एसिड भी होता है. बाइल एसिड में होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टाउरोकोलेट. ये कोलिक एसिड सॉल्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम योर बॉडी. मतलब जो खाना खाया वहां से लिपिड्स कैसे एब्सॉर्ब होंगे, जो बाइल एसिड है वो लिपिड के साथ में कंबाइन होकर इमल्शन बनाएगा एंड दैट इमल्शन इज कैरीड टू ए सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया लिपिडिक सिस्टम. तो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट दे विल प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स इन योर बॉडी. So in that you have cholestyramine, then cholestyramine. Okay. Now third class is nothing but the lipoprotein lipase activators. Lipoprotein lipase activators known as a fibric acid derivative or fibrates. And these lipoprotein lipase activators, they are also known as PPAR alpha receptor activators. So what is PPAR? Paroxysmal proliferator activated alpha receptor. That is a paroxysmal proliferated activated alpha receptor activator. In that you have clofibrate, then gem fibrozil, Baines fibrate, and ये सब क्या है, fibrate fibric acid derivative है. Fourth class in the hypolipidemic. So lipolysis and triglyceride synthesis inhibitor. ये लिपोलाइसिस प्रिवेंट करेंगे बिकॉज लिपिड का अगर ब्रेकडाउन हो गया, लिपिड का ऐसे बना है ट्राइग्लिसराइड से, वो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा देगा. दैट्स व्हाई लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड. सो इन दैट यू आर निकोटिनिक एसिड, इट इज नोन एज अ विटामिन नियासिन और निकोटिनिक एसिड. ओके. नाउ लास्ट वन इज स्टिरॉल एब्सॉर्प्शन इनहिबिटर. स्टिरॉल मतलब क्या है? स्टिरॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल. सो दिस इज ए टिमिब, or is a timib. So this drug will prevent the absorption of cholesterol. ये ड्रग क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का एब्सॉर्प्शन होने के लिए आपके बॉडी में एक प्रोटीन लगता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है. दिस ezetimibe binds with that active transport through which cholesterol is being absorbed from your stomach, from your GID, and it is inhibited. So ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज करेगा. राइट. नाउ इंडिविजुअल ड्रग्स विल सी. First is nothing but the statins. So remember statins, cholestyramine and ezetimibe. जो तीन ड्रग है, statins, cholestyramine and ezetimibe. So they are known as the first line drugs. Statins, cholestyramine and ezetimibe, they are known as the first line drug. सबसे पहले इनको यूज करना है. अगर ओबेसिटी है, अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस है, तो उसमें पहले ये ड्रग यूज करना है. They are known as the first line. Fibric acid derivative, fibrates and niacin, they are known as second line
पहले जो है ये 3 फर्स्ट लाइन वाले क्वेश्चन आपको 100% आ सकता है। नाउ स्टैटिन्स में आएगा आपका अट्रोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, नोवास्टैटिन, ठीक है, परवास्टैटिन, पिटोवास्टैटिन, ये सब स्टैटिन वाले ड्रग्स है। वी हैव सीन द एग्जांपल पिटोवास्टैटिन, रोजवास्टैटिन, ठीक है, लोवास्टैटिन, अट्रोवास्टैटिन, then pravastatin. So all these are the examples of statin. What is the mechanism of action? ये mechanism क्या है उनका, कैसे एक्ट करेंगे? So they are inhibitors of de novo synthesis of your cholesterol. तो आपका liver में liver your body gets cholesterol in a two way. First is nothing but the through a diet. अगर आपने कुछ कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डाइट खा लिया, जैसे चीज खा लिया, मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर नॉन वेज, उसमें से कोलेस्ट्रॉल आएगा आपका। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, नहीं खा रहे हो, मिल नहीं रहा है, सो बॉडी विल सिंथेसाइज इट्स ओन कोलेस्ट्रॉल, liver will synthesize the cholesterol by mechanism involving malonic acid and hydroxymethyl CoA enzyme. So that is known as a de novo synthesis of your cholesterol. Cholesterol synthesis करेगा कौन? Liver. So these statins inhibit the de novo synthesis. De novo मतलब inside the body. De novo मतलब क्या? बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस होता है उसको बोलेंगे de novo synthesis. So statins inhibit the de novo synthesis of cholesterol in the liver. They binds with the one enzyme known as hydroxymethyl CoA. क्या नाम है उसका? hydroxymethyl CoA. It is known as HMG CoA reductase. So liver produces the cholesterol by the pathway involving the malonic acid by HMG CoA reductase, and statins inhibit this rate limiting step. Rate limiting step, this is a rate limiting step, मतलब ये क्या है कि सबसे ज़्यादा important step होता है in the synthesis of your cholesterol, और सबसे ज़्यादा irreversible और सबसे ज़्यादा slow step होता है in the synthesis of cholesterol. So statins are nothing but the HMG CoA reductase inhibitor. So liver produces the cholesterol by pathway involving the malonic acid and HMG CoA. So statins inhibit this step. As liver requires cholesterol for biosynthesis of steroids. लिवर के लिए क्यों लग रहा है कोलेस्ट्रॉल? स्टेरॉइड को आप बायोसिंथेसिस करना है। स्टेरॉइड कहाँ से बनेगा? आपका टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होता है वो कहाँ से बनेगा? फीमेल्स में एस्ट्राडियोल होता है, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन होता है, वो कहाँ से बनेगा? वो बनता है आपका कोलेस्ट्रॉल से in the liver. So liver requires cholesterol for the synthesis of steroid hormones and bile acids, sodium taurocolate and sodium glycolate. These are the two bile acids which are important for your absorption of lipids from your GIT. Right? Now it increases the okay. अगर ये de novo synthesis नहीं होगा तो क्या होगा? लिवर को तो लग रहा है कोलेस्ट्रॉल, लिवर क्या करेगा? तो प्लाज्मा में आपका लिपोप्रोटीन्स है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, कौन सा? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको बोलेगा चल बेटा तू आ जा। तो इट रिक्वायर्स द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड बाइल एसिड्स, as you are not getting liver is not able to synthesize the cholesterol, so it will call the low density lipoprotein, so it will increase the uptake of low density lipoprotein, increase the uptake of low density lipoprotein via low density lipoprotein receptors. It increases the uptake of LDL via LDL receptor on the surface of. Remember, statins are the most powerful LDL lowering agent. Statins क्या है? Most powerful drugs. They are the most powerful drug which lowers the LDL, low density lipoprotein. They also decreases the triglyceride levels of your body, very low density lipoprotein, intermediate density lipoprotein. They don't have any effect on the lipoprotein A. They increases the level of your high density lipoprotein. They will increase the level of high density because LDL is a bad cholesterol. LDL, IDL and PLDL, they are bad cholesterol. HDL is a good cholesterol. Now lipid lowering activity by statin is maximum at night. Lipid lowering activity. Pleiotropic effect of statin. Pleiotropic effect of statin means what? So in addition to the lipid lowering activity, ये statin को क्या है? ये तो HMG को reductase को inhibit करेंगे, उसके addition में क्या है? In addition to that lipid lowering activity, now these statins also have some other effect like antioxidant effect, anti-inflammatory effect, and anti-inflammatory effect and anti-proliferative effect. So antioxidant, anti-inflammatory, and anti-proliferative property or effect. And these are known as a pleiotropic effect. Question इसके ऊपर आ सकता है. What is meant by pleiotropic effect?
In addition to the lipid lowering property of this statins, they also have antioxidant, anti-inflammatory, and anti-proliferative property. Proliferation is movement of cells. Proliferation is movement of cells. Right. So remember, pitavastatin is the most potent amongst the all statin, followed by rosuvastatin. तो pitavastatin जो है ये बहुत ही कम अमाउंट में, कम डोज में सिंथेसिस इनहिबिट करेगा. दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट पोटेंट ड्रग. उसके बाद में आता है रोजुवास्टैटिन. नाउ फ्लोवास्टैटिन एंड लोवास्टैटिन, ये क्या है, लीस्ट पोटेंट है, कम से कम पोटेंसी है. फ्लोवास्टैटिन एंड लोवास्टैटिन. नाउ अटरोवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन क्या है, दे आर द लॉन्गर एक्टिंग ड्रग. प्रोवास्टैटिन क्या है, इट हैज एक्टिव इलेक्ट्रॉन रिंग, इट हैज एक्टिव इलेक्ट्रॉन रिंग. अटरोवास्टैटिन, सिमोवास्टैटिन क्या है, दे आर मोस्टली यूज्ड ड्रग. ये इनको एडवर्स इफेक्ट बहुत ही कम होता है. दैट्स व्हाई मोस्टली यूज्ड. एडीएमए, एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन. बॉडी में एब्सॉर्ब कैसे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, मेटाबॉलाइज कैसे होंगे. सो ऑल द स्टैटिन्स, ओके, ऑल द स्टैटिन्स, दे आर almost 40 to 90% oral absorption. When given orally, they absorb by 40 to 90%. ये days हो गए यहाँ पे, day नहीं है. 40 to 90% they have oral absorption, except fluvastatin. Fluvastatin has a 9. Fluvastatin has a complete absorption. ये पूरा absorb होगा. Now lovastatin, simvastatin, these are the product. Atorvastatin, rosuvastatin, fluvastatin, they are a fluorine containing drug. Okay, fluorine containing active drug. All these drugs undergo first pass effect. ये क्या होता है, we will see later on when we will see general pharmacology. ठीक है. Adverse drug reactions क्या है इनके, देखो. Major adverse drug reaction is nothing but the myopathy and hepatotoxicity. ये दो important adverse effect है, myopathy and hepatotoxicity. They also increase the hepatic aminotransferase level. That's why they are hepatotoxic. Rhabdomyolysis, that is a rare condition and it can cause impotence, gynecomastia in the males. मेल को बच्चे पैदा करने का एबिलिटी कम करेगा, impotence and gynecomastia. मेमोरी लॉस, गजनी बनाएगा, गजनी. इंसोम्निया, भूल जाएगा. मूड, इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप. इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप. आपको नींद नहीं आ रही, दैट मीन्स क्या, नींद नहीं आती है रातों में तो प्रेम छे. ये प्रेम नहीं है, ये ड्रग का कार्यक्रम है. ये ड्रग क्या करता है, इंसोम्निया प्रोड्यूस करता है. सो देन मूड चेंजेस, डिप्रेशन, एंड these drugs are contraindicated in case of pregnancy and lactation. Also does not use in the children's and liver disease. इनको लीवर का प्रॉब्लम है उसमें यूज नहीं करना है, प्रेग्नेंट वुमन में यूज नहीं करना है, बच्चे में यूज नहीं करना है. ठीक है. नाउ यूजेस क्या होंगे इसके, दे आर द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2A एंड टाइप 2B hyperlipoproteinemia, secondary hyperlipoproteinemia. ठीक है. They are used in the prophylaxis of myocardial infarction, ischemic heart disease and myocardial, okay, diabetes mellitus, familial hypercholesterolemia. मतलब अगर होता है ना कि किसी फैमिली में सभी ओबेस होते हैं, कोई फॅमिली देखो आप, सभी के सभी आहे धप्पड से धप्पड, सगळे टप्पू खूप मोठे, कशामुळं त्यांच्या जीनमध्ये आहे. सो दॅट इज अ फॅमिलियल हायपर कोलेस्टोनिमिया, त्यांच्यामध्ये जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे. विल स्टॉप हियर, विल सी द रिमेनिंग पार्ट